there is just a spherical cell and this diameter of this maybe let us take portion of cell like this. Maybe you can slice it out like this, straight line. हाँ ठीक है, ये देखो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो ठीक है। ये फील्ड रहेगा कि नहीं फील्ड रहेगा वो कंफ्यूज। तो फील्ड रहेगा। इट्स लाइक इट इज गोइंग टू बी लाइक अ रिंग, ठीक है। एंड ऑल द रिंग्स फ्रॉम हियर to here, or I mean, we are slicing it like this from this side, this extreme till this extreme. Okay? Everything is going to appear like a ring. क्या होगा? कहाँ पे horizontal pattern? क्या spherical cell को? हाँ तो कैसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हो. It doesn't make a difference. We can cut it like this also or like this also. हाँ बोलो बेटा. अरे डॉट डॉट है कि वो पूरा मतलब ये entire region is filled up. Oh, two-dimensional view of a ring, keeping it like this देख रहा है ना. Are we getting this? So basically हमने कोई भी कड़ा वगैरह है उसको instead of looking like this, we are looking like this. Is that okay? So that is going to appear as a complete, I mean, a single rod type. ठीक है? हाँ, right. मतलब क्या हुआ? Sorry. हाँ, exactly, precisely. रुक जाए, इधर दे थोड़ी देर के लिए वो चीज. भाई यू वो दे दो. देखिए, इट्स लाइक सेल के एक पोर्शन को कट करेंगे, इट्स लाइक संतरा हम छीलते हैं उसको, इंस्टेड ऑफ आर्बिट्रली छीलने के अगर ऐसे गोल गोल छीलते हैं, इट इज गोइंग टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ अ रिंग. We can have two views of the ring. We can look it like this or look it like this. When we are going to look it like this is going to appear as a simple इतना बड़ा सा रॉड पीस. जब ऐसे देखेंगे उसको तो वो सर्कुलर दिखेगा. तो यहाँ की फिलिंग जो करी है मैंने, looking at from this view, when I'm going to look from this, everything is going to look filled up. It's complete material. It is circular in shape. और उस सर्कुलर शेप का जो रेडियस होगा, दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर अस. वो चाहिए होगा हमको, प्लस उसका थिकनेस चाहिए होगा, सो दैट मैं इसका वॉल्यूम या एरिया या वॉल्यूम जैसे भी, बेसिकली एरिया, वॉल्यूम नहीं इसमें आएगा, इसमें एरिया आएगा. तो आई कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिप. इज दैट ओके? थैंक यू. नाउ एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें चाहिए होगा, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट
It could be any point. अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर P को रख देते हैं. However, it can be any point. Again, I'm saying it could be internal, external. We'll consider all those points. Now, this radius there are going to be two more things. ठीक है. ये रेड वाला लाइन, ये वाला लाइन जो है, that is the radius of a ring. And we can name them if we want. It could be A, this point could be B, this point could be C, this point could be D. This is the entire angle is theta, and this small angle is d theta. Length of DC will be, if radius of this is A be the radius of a spherical cell, then this DC length will be equal to DC is going to be AD theta. And radius of the ring will be equal to A, ये भी रहेगा, OB is going to be A, therefore AB is going to be A sin theta. Is that okay? अब the spherical shell of mass capital M and डायग्राम में से और कुछ नोट करना है क्या? And radius A इसके सेट. हाँ, करेक्ट. मास रेडियस A and एक सेकंड, क्या बोल रही हो? एक लेट से उठी बैठ. तो नेक्स्ट वीक है ना, अभी इस वीक वाला तो दे लो. हाँ, तब तक तो वो आ जाएगी ना भूमिका, बिठा के करा दूंगा.
किस दिन आएगी वो? सेकंड कौन सा दिन है? ठीक है, तो वेडनेसडे को बैठ जाएंगे, कर लेंगे। ट्यूसडे को भी बैठ सकते। हाँ, तो वेडनेसडे को बैठ लेंगे। उस दिन सीओएम कर लेंगे और ये भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप लोग के पास टाइम हो। ठीक है, तो गैस कैन कम एट लाइक 2:33 तक आ सकते हो आप लोग, तो आ जाना। खा पी करके 3 सवा 3 बजे आ जाओ, तो 7 बजे तक मैं कंटिन्यूसली रहूंगा लगभग। एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी फिर से हमारे पास 3 चैप्टर्स हो गए हैं खत्म करने के लिए डाउट्स। सीओएम हो गया है, सर्कुलर हो गया है, रोटेशन हो गया, और अभी ये ग्रेविटेशन भी होता है। आप लोग की सॉल्विंग रोटेशन कहाँ तक पहुंची है? खत्म होगा? गुड, गुड। तुमने रोटेशन वाला पूरा खत्म किया पक्के से? तुम्हारा युग कहाँ तक किए हो तुम? और उसके पहले वाले चैप्टर का सर्कुलर मोशन का कहाँ तक, उसमें कुछ किए हो कि नहीं किए हो? उसके पहले वाले का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अनन्या पिल्लाई, मैम हो गई। मासेम, यहाँ पे सेंटर ओ, सेंटर ओ, रेडियस ए is sliced into things in each having radius a sin theta and plus a d theta indicated in the diagram per unit area is equal to capital M upon 4 pi a square. That's total area of a sphere. Therefore, mass क्या? स्फेयर का सरफेस एरिया और सेल का सरफेस एरिया सेम रहेगा। यह मेरा बॉल, देखो ये अंदर से खाली होता है, कट करेंगे तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर।
ठीक है, तो ये क्या है, सेल है। हाँ, सेल का मतलब होता है a sphere which is hollow from inside. Spherical cell and hollow sphere is same. Mass of circular ring sliced from cell is equal to area of the ring multiplied by mass per unit area. Therefore, this can be taken as D capital M. That implies dm is equal to area of ring is इसका periphery जो होगा, that yeah, circumference is going to be 2 pi a sin theta और thickness है a d theta. So area will be 2 pi a sin theta into a d theta. This is the area of ring. Into m by 4 pi a square. So it becomes m upon m by 2 sin theta d theta. ठीक है, the gravitational field, sorry, gravitational potential at point P due to this ring is equal to minus g dm on रिंग वाले का क्या था हमारा, ये तो डिस्क का था. Where is the ring? So ring is gm minus gm by root under a square plus x square. ठीक है, सेम चीज यहाँ पर हो जाएगा. So it will be g dm root under a square plus x square where x is the just from center of the ring.
राइट बेटा। वॉल्यूम इसका कैसे आएगा, तो उसका और एक थिकनेस आएगा ना। देखो जैसे ये रिंग पहने हुए होंगे, तो ये थोड़ा मोटा है, ठीक है, इसका ये थिकनेस है। तो पहले मैंने पेरीमीटर लिया, पेरीमीटर से ये वाला जो थिकनेस है इसको मल्टीप्लाई किया, तो मुझे ये सरफेस एरिया मिला इसका। अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो मुझे ये वाला थिकनेस भी लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड वी आर एज्यूमिंग ये चूंकि सेल है, मतलब बहुत पतला है, बहुत पतला है, तो थर्ड डायमेंशन इसका नील रहेगा। तब इसमें एक डिस्टेंस लेना मैं रह गया है, OA length is going to be A cos theta, right? Therefore, AP will be equal to x minus A cos theta. ये वाला डेफिनेशन भी मॉडिफाई हो जाए, right? कर रहा हूँ ये। फिर DM को M ही लिख देते हैं। M mass of ring, mass of ring, and X is equal to distance of point from center of the ring. Now, from diagram, OP is equal to X, OA is equal to A cos theta. Therefore, AP is equal to X minus A cos theta. Therefore,
बीपी निकालेंगे फिर जरूरत हमें है नहीं, एक्स के टर्म्स में है चीजें मेरे पास तो this BP distance is going to be same. So x के बदले हम x minus a cos theta लिख लेंगे अपने इस फॉर्मूले। x is the distance of point from center of the ring, या फिर मे बी इसको थोड़े देर के लिए हम x के बदले y लिख लेते हैं या t लिख लेते हैं, तो y ले लेते हैं। तो, और यहाँ पे y is equal to distance of point from the ring, क्योंकि x कुछ और वेरिएबल लिए हुए हैं इसलिए इसको y लिया। Therefore dv will become equal to minus g dm upon root under a square plus x minus a cos theta whole square, or dm is equal to minus gm by 2 root under a square minus plus x minus a cos theta whole square। यहाँ हो जाएगा ये नहीं, साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा now this thing can be integrated from theta is equal to 0 to theta is equal to pi, right? Integrating from integrating v from 0 to v theta from 0 to pi will यहाँ पर x माइनस ए cos थीटा को अगर मैं t लेता हूँ, ठीक है, so it will become dt upon root under a square plus t square
एक सेकेंड, ये स्टेटमेंट के पहले ये लिख लेना होता है। लेट t is equal to x minus a cos theta. Therefore, dt is equal to a sin theta d theta. अच्छा, a के नीचे आ जाएगा, so that will become 2n. That implies sin theta d theta is equal to dt by a. अब बेटा, हाँ आ गया ना, इसको बाहर लिख दिया, ठीक है। and and theta is equal to 0, t is equal to x minus a, and theta is equal to pi, x is equal to, sorry, t is equal to x plus a, right? So the limits of integration will also change. The limits of integration will also change accordingly, and it will now become x minus a to x plus a. रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन कुछ और भी ले सकते हैं, तो एक्चुअली ये पूरी चीज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। माइनस, नहीं ठीक, ये तो ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर रूट अंडर का इंटीग्रेशन क्या होगा? सॉरी, हाँ, और अरे इस पर माइनस हाफ तो है ही, बट यहाँ पर टी नहीं है ना, और एक टी आएगा मतलब नहीं, कुछ और टर्म्स भी रहेंगे। आप क्या बोल रहे हो, इसका इंटीग्रेशन टी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर? नहीं, आई डोंट थिंक सो। इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और प्लस इसका जब डेरिवेटिव लोगे आप टी को एज इट इज रख के, इट इज गोइंग टू बी 2t, सॉरी 2t बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। सो इट विल बिकम ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर divided by root under a square plus t square. This is not the right integral. कुछ और टर्म्स भी इसमें रहते हैं। ये अलग से आखिरी में 6 फॉर्मूले थे, उसमें से एक फॉर्मूला इसका। हाँ सॉरी, और साइन इनवर्स का नहीं रहेगा, ये रहेगा टैन इनवर्स। टैन इनवर्स भी नहीं रहेगा, नहीं, नहीं।
ए स्क्वायर प्लस माइनस टी स्क्वायर रहता तो साइन का रहता या कॉस का रहता और दिस इज क्या क्या नहीं नहीं लॉग नहीं है लॉग फाइनल में नहीं आएगा इट इज गोइंग टू बी साइन इनवर्स साइन इनवर्स ठीक है एक और सेक्शन he can be taken as a tan phi dt will be equal to a sec square phi d phi. Denominator will become a square plus t square is equal to a sec phi. Divide करेंगे तो it will become a sec square phi d phi upon sec phi. क्या हुआ sec phi कैसे आया t की वैल्यू a स्क्वायर tan स्क्वायर पाई रहेगा ना 1 + tan² sec स्क्वायर तो इट इज sec phi d phi इंटीग्रल और sec phi का इंटीग्रल जो होता है इसको हम tan प्लस sec से मल्टीप्लाई करेंगे और tan प्लस sec से डिवाइड करते हैं sec phi
into tan phi plus sec square phi divided by tan phi plus sec phi. So tan का sec स्क्वायर हो गया और sec phi का sec phi tan phi हो गया. हाँ ठीक है. So it will be ln tan phi plus sec phi. और tan phi is t by a and sec phi is root under a square plus t square by a. So this is ln t by a plus root under a square plus t square by a. इसको हम यहाँ पे आके रख लेंगे माइनस dm by 2a इसको नोट मत करो कुछ क्या बोल रहे हो. हाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 2ax cos theta. So a square sin square theta plus a square cos square theta will add up to become a square. So it will be x square plus a square minus 2ax cos theta. So यहाँ पर भी अकॉर्डिंगली ये मॉडिफाई हो जाएगा. It will become x square plus a square minus 2ax cos theta
ये हट जाएगा, इसके बदले दूसरी चीज आ जाएंगी। इसके बदले ये पूरी चीज जो है ना, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax cos थीटा रहेगा। therefore dt will become 2ax sin theta. So it will become 2ax sin theta, or sin theta d theta will become 2ax dt by 2ax. Also theta is equal to 0 for it will become t will become x minus a का होल स्क्वायर, ठीक है, और theta is equal to pi पर it will become x प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट, ठीक है, दो कंडीशंस यहाँ पर लिखेंगे, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। मैं बता देता हूँ क्या कंडीशंस। देखिए x जो है दैट कैन बी ग्रेटर देन a और लेस देन a, दो कंडीशंस आएंगे, या फिर x इक्वल टू a, ठीक है। x is greater than or equal to a एक condition and x is less than a दूसरा condition, ठीक है। so accordingly चीजें क्या हो जाएंगे, हाँ, there are going to be two cases. Let this, इसको ठीक है, इसको रहने देते हैं, ये एक्चुअली केस 2 के करस्पॉन्डिंग है। let this is equal to this, also क्या हुआ, there will be two cases pertaining to position of x with respect to shell. Case 1, x is greater than equal to a. तो यहाँ पर हमारे पास ये रहेगा at theta is equal to 0, t is x minus a whole square, and at t is equal to pi, theta is equal to pi, it is going to be x plus a. और केस 2 में it is going to be उल्टा, it is going to be a minus x का whole square, a minus x will be a positive number, and ये तो ठीक है, किसी भी ऑर्डर में लिखे फर्क नहीं पड़ता। सो केस 1 के लिए इंटीग्रेशन हम करते हैं विद पुटिंग दीज थिंग्स, dv into v will become equal to minus gm by 2, और इसको dt से रिप्लेस किया, dt by 2x, तो 4ax हो गया,
4a integral of x minus a whole square x plus a whole square. This will become dt by root t, right? इसका इंटीग्रल हो जाएगा रूट टी अपॉन सॉरी 2√2 minus 2√2 ना. This is t raised to the power minus half. अच्छा नहीं 2√2 माइनस नहीं रहेगा, ठीक है. So it will become minus gm by 4ax root and into 2 root t under the limits x minus a whole square and x plus a whole square. ठीक है. नीचे वाला minus half added to 1 will become plus. So this is minus gm by 4ax into, और ये 2 बाहर आ जाएगा, it will become x plus a minus x minus a. Is that okay? ये 2 पहले से है, इसको रहने देंगे. This 2 will get cancelled. रूट है ना, अरे इसीलिए तो इसका ये 2 केस बना, नहीं तो बनता ही नहीं. फिर a minus x का स्क्वायर करो या x minus a का स्क्वायर करो, it is going to give the same number. a आएगा, राइट. तो स्फेरिकल सेल के अंदर का पोटेंशियल जो होता है कांस्टेंट होता है, दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट द सरफेस. आई थिंक इट शुड बी रिटन लाइक दिस. यहाँ पर इक्वल टू का साइन यहाँ से हटा दो, इक्वल टू का साइन दूसरे वाले में. बाउंड्री तक का पोटेंशियल और अंदर का पोटेंशियल सेम रहता है, और बाहर के पोटेंशियल के लिए द स्फेरिकल सेल एक्ट्स एज अ पॉइंट मास. So it will become minus gm by 2ax. X cancel, it will become 2a. So 2a will be cancelled with 2a to give minus gm by x. Dx will. So for external point spherical cell behaves as a point mass. Placed at center of shell. For all external points for all external points the spherical cell behave as external point
ऑफ स्फेरिकल सेल, नहीं नहीं, विथ रेस्पेक्ट, कॉमा है, कॉमा छूट गया था, कॉमा ही छूटा है, कॉमा डाले या फिर सेमी कॉलन डाले। behave as a point mass placed at center of the cell, और v अगर ये है तो पोटें सॉरी फील्ड क्या हो जाएगा, e वेक्टर g, और g vector will become minus dv dr r cap, which is equal to minus dv dx I cap for our case. So minus dm by x square and case 2 x is less than equal to a. It is dx will be equal to minus gm by 4 a h integral a minus x whole square to a plus x whole square dt upon root t, the way we have written over here. ये वाला पॉइंट भी कॉपी करना पड़ेगा ना। a minus x whole square and ये वाला तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ
ठीक है, नेक्स्ट वाले पेज पर उसको become equal to minus Gm by 4x 2 in the limits a minus x whole square a plus x whole square going to give rise to m by 4ax into 2 times a plus x minus a minus x. So this will become 2a, sorry, 2x minus gm by 4ax into 2 into 2x. That thing will be cancelled by 4 and x. Final thing remaining will be minus gm. So the spherical cell will have, sorry, हाँ फील्ड तो जीरो होगा, कांस्टेंट है ना, ठीक है. तो spherical shell will have the potential GP everywhere, everywhere inside the shell it is same as GP at the surface.
surface of the shell. ठीक है. Next thing is, therefore, Eg vector or G vector is equal to minus dv dr r cap is equal to minus dv dx I cap is equal to 0, as Gp is constant inside. ठीक है. इसका ग्राफ कैसा दिखेगा हम लोगों को? पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस, V versus distance. This may be taken as R, और 0 से लेकर के there is going to be a point capital R. Capital R क्या होगा? Radius of the cell. ठीक है. Radius, या कैपिटल R नहीं लेना है, A लेना है तो A ले सकते हैं. E लिया हुआ था शुरू में. We are taking that only. Distance of point P from center of cell. So that is going to be equal to constant this value for external points. It is going to hyperbolically increase or change hyperbolically. Are we getting this point? अच्छा, ये अगर mod v लेंगे तो नीचे की तरफ आएगा. ठीक है. और mod v नहीं लेंगे, सिंपल v लेंगे तो ये टर्म भी जो होगा ये एक्चुअली जीरो लाइन के नीचे है. So our zero line is lying somewhere over here. Zero potential. ठीक है. This is zero line. Potential 0. This is minus Gm by A. ठीक है. और ये यहां से इस तरीके से जाएगा, becoming equal to 0. Is that okay? और fourth quadrant में है. हाँ, it is in fourth quadrant. इन्फिनिटी को रेफरेंस लेकर के अगर हमने किया है, इन्फिनिटी को जीरो पोटेंशियल लिया है, तो ग्राफ ये रहेगा. ठीक है. और अगर हमने रेफरेंस चेंज किया, इन्फिनिटी को जीरो करने के बजाय इस पोजीशन को जीरो किया, जीरो पर जीरो किया,
ठीक है, तो फिर क्या होगा, इन्फिनिटी पर हमारा जीएम बाई ए हो जाएगा पोटेंशियल। ठीक है ना, सो इट विल बी लाइक दिस टिल हियर, एंड फिर इट विल राइज टू बिकम जीएम बाई ए। ठीक है ना, हम सिर्फ इस लाइन को शिफ्ट कर रहे हैं नीचे की तरफ ना, नेचर ऑफ कर्व विल रिमेन द सेम। ठीक है, हाँ, माइनस जीएम बाई ए है ना। नहीं, वो ओरिजिन नहीं है ना। हाँ, दिस इज द ओरिजिन, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग। कौन वाला ये, यहाँ पे, ये ना, तो यहाँ पे ये है। ठीक है, फील्ड का कैसा रहेगा, सिमिलरली फील्ड इज गोइंग टू बी, अब वेक्टर का हम ड्रॉ कर रहे हैं, स्केलर का ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू लुक एट, यानी मॉड वैल्यू ले रहे हैं या फिर मैग्नीट्यूड को अगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मॉड ई वेक्टर जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा ऊपर की तरफ, मॉड ले लेंगे तो, सो इट विल बिकम दिस एंड दिस। मेनी टाइम्स आपको ग्राफ ऐसे दिखेंगे, ठीक है, बट दैट इज मॉड ग्राफ, मैग्नीट्यूड का ग्राफ देखिए। ठीक है, ईजी का ग्राफ जो होगा हमारा, मॉड ईजी, इनिशियली इट इज गोइंग टू बी जीरो। ठीक है, एक्स लिख लो तो जो भी लिखना है लिख, इस वाले एक्स एक्सिस एक्स लिख लो। फिर ये अचानक से यहाँ पे, with a point of discontinuity, it will rise to a particular value just above of x is equal to a, यानी सरफेस के जस्ट बाहर वाले पॉइंट पे, जस्ट बाहर वाले पॉइंट पे the field is going to rise abruptly, modulus of the field, magnitude of the field। ठीक है, क्या, क्या,
and then it is going to fall hyperbolically. ठीक है, ये मॉड का, ठीक है ना? अदरवाइज इसका साइन जो, हाँ बोलो कौन सा? हाँ, इट विल टच एट इंफिनिटी. स्लोली, ठीक है, ये डायरेक्शन तो नीचे की तरफ है, इंफिनिटी पर टच करेगा. So this is how the graph of Ag versus X or R is going to look. ठीक है, आखिरी चीज है हमारा, इसके बेसिस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सॉलिड स्फीयर. ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है gravitational potential of solid sphere. So the things are going to be something like this. This is a spherical. This is a solid sphere. इसके अंदर हम एक spherical cell बना लेंगे of certain thickness at a distance small r from the center. So ये वाला distance में small r, thickness is dr. ठीक है, और पूरा रेडियस इज a, and we are looking at a point which is the point P can have two positions. Sorry, three positions. It could be an outside point, it could be a point on the surface or inside. और तीनों के लिए we will have to see as per spherical cell वाला चीज कैसे डेवलप करते, क्या डेवलप मतलब क्या आता है. ठीक है, तो हाँ, इसके लिए तीन केसेस या दो केसेस भी कर सकते हैं, बट ठीक है, तीन केसेस भी सीधे किसी में जीरो नहीं होगा. देखते हैं, लीनियर वेरिएशन अंदर के पॉइंट्स पे लीनियर वेरिएशन है. और this distance is x. This is O. Of solid sphere of mass capital M, capital radius small a is taken. It is split into spherical
shells of varying radius between 0 r is equal to 0 to radius is equal to 0 to let radius of one such shell be r, and thickness of the shell is dr. Then mass of this shell dm will be equal to mass per unit volume for solid sphere into volume of capital, sorry, m by, there is a continuous mass distribution across the volume, m by 4 by 3 pi a cube into volume of the cell क्या होगा, it will be 4 pi r square dr. ठीक है, surface area of the cell multiplied by its thickness. इसको लिख सकते हैं surface area of shell into thickness. तो ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर में 3m आ जाएगा, तो 3m by r square dr upon a cube. This is dm. The point under investigation point under investigation, point B under investigation can lie outside, on surface, side, on surface, or inside the sphere.
Therefore, we have three cases. Case 1, x is greater than a. For this, gravitational potential due to sphere will be equal to summation of gravitational potential of all the shells sphere at point P is equal to summation of gravitational potential of this of all the cells at point P. Is that okay? So it will, we can directly write Vx is equal to integral minus Gm by सेंटर से डिस्टेंस लेना था हमको, so it is going to be r is the radius, this will be x, a dm by x integrated between r is equal to 0 to r is equal to a minus g x integral m by a cube into r square dr 0 to a. Is that okay? pm है, हाथ ही नहीं रहेगा तभी कैंसिल होएगा. That's 3g minus 3g और dr हो जाएगा dr. x रहेगा तो x अंदर लेना पड़ेगा. तो it is minus 3g, m भी कांस्टेंट है बाहर ले सकते हैं, a स्क्वायर भी a क्यूब कांस्टेंट है, x है, this is going to be r cube by 3 under the limits 0 to a, and it becomes equal to minus 3gm a cube x into a cube by 3. So this is going to be a cube 3 by 3. क्या? हाँ, external points के लिए gravitational potential is going to be either cell or the entire sphere will work as a point. ठीक है? Earth का gravitational potential on the surface is g into capital M mass of Earth divided by radius of Earth. ठीक है? और इससे हमारा ये आ जाए आएगा gravitational field भी आएगा. So it is going to be
equal to minus dm by x. That is for external points solid sphere works as a point mass. Works or behaves as a point. Now, AG vector is equal to or G vector minus dV by dr r cap, which is equal to minus dV by dx I cap. For our case, that is equal to अच्छा ये जी वेक्टर तो है ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, जी वेक्टर, so this is going to be minus of differential of minus dm by x with respect to x of minus gm by x square. ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से डिफरेंस लेंगे माइनस आई कैप हो गया. तीसरी चीज जो है, दूसरी चीज एक्स का डिफरेंशियल लेंगे, 1/x का डिफरेंशियल लेंगे तो 1/x स्क्वायर ही होगा. इंटीग्रल 1/x. Point P is inside the sphere. इसका डायग्राम भी हम लोग एक बार फिर से बना लेते हैं. So suppose point P, sorry, ये सेंटर ऑफ स्फीयर है O, and the cell, or maybe like let us say point P is located over here. ठीक है. अब the key idea over here is we have to break down this into two reasons. दो reasons में मुझे इसमें क्या है E को बाद में लेते हैं, पहले इसको इसके ऊपर रखते हैं. ठीक है. So O is the center and the point P is lying on the point P under consideration is lying on this spherical portion. So अभी point P is dividing this sphere into two zones. एक zone ऐसा है which is this zone, and this zone is basically outside this spherical region, or this point P is basically inside of this spherical zone.
इज दैट ओके? और ओ से लेकर के पी तक वाला जो स्फेयर है उसके लिए ये क्या है? आउटसाइड पॉइंट है। ओ से लेकर के पी तक का जो पोर्शन है स्फेयर का, उसका उसके लिए पी पॉइंट इज अ सरफेशियल पॉइंट। ठीक है। और ये बाहर वाले पोर्शन के लिए इट इज अ इंटरनल पॉइंट। ठीक है। हाँ। तो अभी हमको क्या करना होगा, बाहर वाले के लिए इट इज इंटरनल पॉइंट। और इंटरनल पॉइंट्स के लिए बिहेव कैसे करते हैं ये स्फेरिकल सेल जो है, दैट बिहेव्स दैट इंटरनल पोटेंशियल इज सेम। ठीक है। तो अगर यहां पर मैं एक इस तरह का, ठीक है, क्या हुआ? अच्छा, टाइम तो यार 35 हो गया अभी तक। ये वो कॉल भी कर लेता हूँ, 30 तक आया। Your call will be answered shortly. Please hold the line. हेलो। हाँ सर। अच्छा अच्छा, आ गए। ठीक है चलेगा सर, ओके। मैं हूँ यहीं पर हूँ, क्लास में लिए छुट्टी शुरू आ जाएगा। हाँ। हाँ। तो I maintain this radius as, or position of point P is at the x distance from center. Radius of this portion is equal to r, and thickness of this portion is equal to dr। ठीक है। तो and r is going to vary from x to capital A, right? X to capital A, क्या? रेडियस स्मॉल ही है तो रेडियस जीरो टू ए नहीं, एक्स टू ए। क्योंकि दिस पॉइंट पी इज, ये जो स्फेयर है मेरा छोटा वाला जो स्फेयर, बड़े स्फेयर के अंदर जो छोटा स्फेयर लिया, इसको किसी और कलर का मार्क कर दें। यू गाइस वांट व्हाइट तो करेंगे तो घर हो जाएगा, विल पेंटेड ब्राउन। ठीक है। सो देयर इज दिस ब्राउन स्फेयर। इस स्फेयर के
बड़े वाले स्फेयर के अंदर ये छोटा स्फेयर है, इसके लिए पॉइंट पी एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। और इसके बाहर जो स्फेयर का पोर्शन है, बड़े वाले स्फेयर का पोर्शन, उसके लिए पॉइंट पी इज इंटरनल पॉइंट। सो दिस आउटसाइड रीजन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल सेल्स, और हर सेल के रेडियस के करस्पॉन्डिंग उनकी वजह से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल्स रहेंगे। हाँ, देखो, जब इस स्फेरिकल सेल के अंदर का पोटेंशियल क्या होता है, इट इज कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू द रे आई मीन जीएम बाई रेडियस ऑफ द सेल। अब रेडियस ऑफ द सेल यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स से थोड़ा सा ज्यादा होगा, सेल अगर लिया तो यहाँ पर लूंगा तो उससे ज्यादा, और ए तक वेरी करेगा। तो एक्स is varying, sorry, radius of the cells are varying from x to small a, ठीक है। 2 मिनट। Gravitational potential at P is equal to gravitational potential at P due to exterior shells with radius between 0 to, sorry, x to a, ठीक है। यहाँ पे समेशन वर्ड भी यूज कर सकते, समेशन ऑफ, हाँ बोलो बेटा। क्या मतलब, नहीं समझा मतलब। हाँ, किसके कंपैरिजन में? हाँ, मतलब कम होना चाहिए, मतलब नहीं समझा किसके कंपैरिजन में। पी के कंपैरिजन में बाहर वाले का पोटेंशियल, मतलब ए, सॉरी, इस क्लस्टर के बाहर वाले पॉइंट्स का ना। नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। सरफेस पर हाईएस्ट रहेगा, हाँ बोलो ना। तो हर बार नहीं होगा ना, और मास बढ़ेगा उसका, मास बढ़ेगा ना। हाँ, तो डिस्काउंट नहीं करेंगे ना। समेशन जीपी at P due to exterior cells with radius between x to a plus gravitational potential due to sphere of radius x for which point P is outside point. Is that okay? तो यहाँ के लिए हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला पार्ट। सो इसको डायरेक्टली वीएक्स लिख लेते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन x to a
माइनस जी एम बाई पीरियड पॉइंट है तो एक्स सॉरी सॉरी here it will be gm by r. यहाँ पे कुछ आएगा टर्म m जो है that will get replaced by ये वाले का मास हमको निकालना है. It is going to be m upon 4 by 3 pi a cube into 4 pi r square dr. ठीक है, which is equal to 3m by 3m square m r square dr by a cube. सेम एज ऊपर जो सेल का किया था. तो दिस इज गोइंग टू बी g इंटू dm के बदले हम 3m r स्क्वायर dr अपॉन a क्यूब और नीचे में डिवीजन होगा एक और r से. इज दैट ओके? रेडियस and the radius is varying from a to x. ठीक है, this will be added with. यहाँ पे इंटीग्रेशन डालने की जरूरत नहीं है. केस 1 में हमने ऑलरेडी स्फीयर के बाहर जो पॉइंट लाई कर रहे हैं उसको कंसिडर किया हुआ है. सो हाँ, तो इट विल बिकम माइनस जी. बस मास रखेंगे इस वाले स्फीयर का, तो इट विल बिकम m बाई 4/3 पाई a क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई x क्यूब. इज दैट ओके? 4/3 पाई पूरा कैंसिल हो जाएगा. बेटा अंदर वाला जो स्फीयर है उसका मास कितना होगा ये कैसे पता चलेगा हमको? ठीक है, ठीक है. एक्स रेडियस का जो स्फीयर है अंदर वाला उसका मास कितना है ये मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है ना. सो आई एम मल्टीप्लाइंग इट विथ मास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. इसको इंटीग्रेट किया हमने तो इट बिकेम, इसको बाहर ले लेंगे माइनस जी या -3 gm r cancel, it will become a cube integral r dr 0 sorry x to a plus sorry minus gm x cube by a cube. हाँ सर. into r square by 2, that is a square minus x square by 2 minus gm x cube by a cube. और एक यहाँ पे एक टर्म ये x का छूट रहा है. इट्स माइनस जी बाई जी एम बाई एक्स होता है द रेडियस. ठीक है, या डिस्टेंस जो है वो रहता है ना x डिस्टेंस, तो वो x मिसिंग था मेरा. अभी तो ये तो सिर्फ मास ही निकाला था ना. नहीं नहीं सिर्फ x. अच्छा ऊपर, हाँ हाँ हाँ
ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब वही गड़बड़ हो रहा था, मैं सोचने लगा फिर क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी gm by a cube with minus sign multiplied by a square minus x square by 2 into, sorry, 3a square minus 3x square by 2 plus 2x square by 2. That gives us minus gm a cube into 3a square minus x square. ठीक है, दिस इज पोटेंशियल और बाई 2 का 2 को बाहर ले रहे हैं और इसका फील्ड जो होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या हुआ केजी 120, सॉरी क्या बोल रही हो, दिस ओवर 9 और v at x is equal to minus gm by 2a cube into 3a square minus x square. G vector or G vector is equal to minus gm by 2a cube 3a square minus x square negative of minus t on dx minus minus plus gm by 2a cube, ये 0 हो जाएगा, ये minus 2x हो जाएगा, ठीक है। तो g vector और g vector is equal to minus gm by a cube into x and it will be I cap, ठीक है। तो इसके ग्राफ कैसे होंगे, दो ग्राफ्स रहेंगे, एक पोटेंशियल वाला और पोटेंशियल विथ x अप टू a, मॉड v लेते हैं अगर मॉड v, तो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, 0 से इंक्रीज करेगा और फिर यहाँ पर एंड नहीं सॉरी ये फील्ड होगा, सॉरी सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी इंटरनल पॉइंट्स के लिए इट वाज वेरिंग लाइक a square minus x square, so x square minus 3 is a square नेगेटिव रहेगा और x स्क्वायर रहेगा, मतलब पैराबोलिक हो गया, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। सिंपल भी अगर ले रहे होंगे तो इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस, ये जीरो लाइन है, it will come to the bottom like this और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये पैराबोलिक है और ये हाइपरबोलिक कर देते हैं यहाँ से, इट इज गोइंग टू गो लाइक दिस, ठीक है। मॉड वी लेंगे, ये जीरो लाइन है मेरा, ठीक है। मॉड वी अगर लेते हैं, मैग्नीट्यूड को सिर्फ देखते हैं,
So it is going to look like यहां से ये ऐसे जाएगा पैराबोलिक मैक्सिमम तक पहुंचेगा और फिर यहाँ से ये फॉल डाउन हो रहा होगा तो होगा इट इज गोइंग टू डिक्रीज एज अ हाइपरबोलिक कर्व। ठीक है, और ये पॉइंट क्या होगा, इट विल बी जी एम बाई ए। ठीक है, पोटेंशियल के बाद हमारा दिस इज v वर्सेस x, उसके बाद E का जो आ हाँ दिस इज मॉड v, मॉड v, और उसके बाद जनरली हम लोग को मॉड वी वाला ग्राफ देखने के लिए मिलता है, उसी को वी बोल बोल करके बेचते रहते हैं हम लोग। एग्जाम वगैरह में डायरेक्टली ये वाला ग्राफ आ जाता है तो वी गेट सुपर सरप्राइज। ठीक है, ये कुछ टिपिकल चीजें हैं जिसके ऊपर इट इज प्लेड। और ईजी यहाँ पर मॉड लेते हैं तो यहाँ पर माइनस साइन जो होता है ना दैट सिंपली इंडिकेट्स द डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड वाला ही देखते हैं। मॉड वाला इंटरनल पॉइंट्स के लिए द वेरिएशन इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है सिर्फ, और फिर यहां से ये क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी हाइपरबोलिकली डिक्रीज। ठीक है, 1/x², हाँ, and will fall down to 0. So this value is, this point is gm/a²। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मेरे वाले ग्राफ में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ये पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी रहता है, डिफरेंशिएबल नहीं रहता है इक्वल टू आर पे, उसके पहले और बाद में रहता है। तो लिमिटिंग केस लेते हैं यहाँ पे, लिमिटिंग केस से हम निकाले हुए रहते हैं सारी चीजें। नेवरदलेस दिस इज इट। ठीक है, सो ये पोटेंशियल और फील्ड वाली चीजें खत्म हो गई हमारी। अब नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी डूइंग 4 एप्लीकेशंस ऑफ इट, एंड विद दैट द चैप्टर विल गेट। मीटिंग एंड कर रहा हूँ एंड आई विल बी रीस्टार्टिंग द मीटिंग।